Okay, today we can discuss two other process of landform formation. One is the process by wind, another by glacial. Wind, the process by which the wind create a landform is called aeolian process, and the landform built is termed as aeolian landforms. Like the same, the glacial also through its processes creates landform, and those landforms we will call as glacial landforms. So first one we can look at the aeolian landforms. तो इसमें भी ऐसा है, इरोशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा. Just like the fluvial landforms and processes that we have discussed yesterday, the same way the aeolian landforms also have these three processes that include erosion, transportation, and deposition. But the landform is mainly transportation में इसमें तो aeolian का उतना landforms नहीं है. Mainly it has landforms by erosion and deposition. So what is aeolian landform? Landforms made by the action of wind. So Aeolus, that is the name from where the aeolian landform came from, and it means the Greek god of wind. Two type of landform formation, erosion and deposition, that we have already told. So in the erosion processes, in deposition we know that the process is mainly velocity to kam hoga, then there will be deposition, or load ka there will be heavy load, then also deposition. Just like the fluvial process, in aeolian process also deposition has two criteria. One, either it should have heavy load, otherwise there should be some obstruction or reduction in the velocity. ये दोनों टाइम में there will be deposition. And for erosion, there is two principal process in erosion for aeolian. Wind का two process है. One is deflation, another one is abrasion. Very important. Removal of loosened material and its transport as fine grains in atmospheric suspension, that is deflation. तो जैसे लास्ट टाइम भी जैसे फ्लूवियल का बोल दिया, यहाँ भी सस्पेंशन है, बट द सेम प्रोसेस if it is done by the wind, we will say it as deflection. Removal of loose material. उसका तो साइज तो बहुत छोटा होगा, वो एयर में फ्लोट करके वो एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाएगा. That is deflection. Then the abrasion, that is mechanical wear of coherent material. जो ग्रुप में था, वो यूनिफाइड था, वो मटेरियल को मैकेनिकली वेयर से लास्ट टाइम फ्लूवियल में बोला था, वो अपना टूल यूज करेगा, मैकेनिकल टूल्स यूज करके इसको तो इरोड करेगा. जैसे विंड भी जो उड़ाता है ना, वो सैंड ये सब छोटा छोटा चीज को उड़ा के जा रहा है ना, वो सैंड इसमें हिट करेगा, कोलाइड करेगा, तो वो बड़ा चीज को भी इरोड करके लेके जाएगा. So that process is called abrasion. So these are the major principal process that is happening in erosion, aeolian erosion. Occur in, if this is not only happening in desert region. Usually we know that this aeolian landforms mostly seen in desert area, but we can't say it is only confined to that particular area. It may see in coastal area and also large agriculture field में भी ये तो देख सकता है. And there is a misconception that desert is hot, but we know that as a geography we know that desert is hot and cold deserts are there. Even in the hot desert, in sometimes there is too much of cold because the temperature, today temperature variation is very high in desert region. From melting point to from 40 degree to even it will go below 0 degree at some times. That is the temperature variation in desert regions. So what are the landforms?
produced by wind. Yes, sir. These are the important landforms that is being produced by wind, aeolian landforms. So दो तरह का है, erosional landforms भी है, depositional landforms भी है. So you can expect questions from this side that ऐसा पूछेगा ये landform wind generated, which type of landform is created by wind, वो ऐसा भी बोल सकते हैं. उसके साथ फ्लूवियल का देगा, ग्लेशियल का देगा, नहीं है तो कास्ट रीजन का देगा, ऐसा देगा, उसके साथ ए भी देगा. So very important, there is high chance of asking question from this side, especially in objective type questions. So what are they? One is venti facts, then second one mushroom rocks, deflation basin, 𝐬𝐭𝐮, yardangs, inselbugs, mesa and butts. These are the major. If you look, you will get more and more, but these are the major erosional features. So question maximum, most probably it will come from these 7 for erosion and this for in deposition. In deposition, it is sand dunes, barkans, longitudinal dunes or seaf and loess plains. So these are the depositional landforms created by wind. Let's look each of the erosion landform. First one is venti facts. Geomorphic feature made of rock. They are either abraded, pitted, etched, or it is actually abraded. The wind जाएगा, एक तो hard rock होगा, उसके within that hard rock you can see softer areas as well. वो wind जाएगा and it will erode all soft parts. पूरा soft area को लेके जाएगा. नहीं ये तो एक जगह पे विंड अभी नीचे से, इसमें देखने से आपको समझ में आएगा ये तो नीचे से विंड जा रहा है, तो मैक्सिमम नीचे का जो पोर्शन है वो उड़ा के, सॉफ्टर एरिया था वो उड़ा के गया है, एंड द अपर पोर्शन रिमेन्स as it is. वो तो अपर पोर्शन में इरोशन कम होगा तो नीचे का ऐसा हो जाएगा. तो ऐसे वाला इधर भी देख सकता है, जो सॉफ्टर एरिया तो पूरा उसको तो निकाल के गया है, एंड there exists a remaining hard rock portion, remaining feature होगा, hard area तो remaining होगा. That kind of feature we will say it as venti facts. अभी bird कुछ है, अभी mushrooms ये सब it's a part of venti facts है, same है. So this is actually venti fact which is eroded by the wind. The next one is mushroom rock. If you look the picture, you can see same here and here. So mushroom rock is also a venti fact. In reality, it is also a venti fact. But what is the difference in mushroom rock? A mushroom rock, also called as rock pedestral or pedestral rock, is a naturally occurring rock whose shape, as its name implies, resembles a mushroom. एक mushroom जैसा है, mushroom पता है ना, वो ऐसा मशरूम जैसा होगा इसका शेप. नीचे बहुत थिन होगा, अपर एरिया बहुत बड़ा होगा. दैट इज मशरूम रॉक. इसका मेन प्रॉब्लम है कि अभी ऐसा वाला एक तो बड़ा रॉक होगा, ऐसा वाला एक बड़ा रॉक होगा, जब विंड जाता है वो नीचे से जाएगा, ऐसे दोस्त नीचे से जाएगा तो ये इरोड, नीचे का जो पोर्शन है वो इरोड करके ऐसे बना देगा, इरोड करके ऐसा बना, ये पूरा इस एरिया को इरोड करके जाएगा. तो इट विल गेट द शेप लाइक दिस, ऐसा शेप बन जाएगा वो नीचे का. सो इट विल गेट द शेप ऑफ ए मशरूम. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज मशरूम रॉक. एंड थर्ड वन इज डिफ्लेशन बेसिन. Deflation basins, also known as blowouts. Blowout, wind blows. So wind ऐसा वाटर, जैसे वाटर को हम फ्लो कर रहे हैं ऐसे विंड को हम लोग बोलते हैं ब्लो. तो इसको तो ब्लो आउट, इसको तो लेके उड़ा के जाएगा. वाट, इसका तो मटेरियल जो विंड जब ब्लो होता करता है उसी टाइम में जो मटेरियल्स है, लाइटर मटेरियल्स है, उसको तो वो उड़ा के जाएगा. जस्ट लाइक डिफ्लेशन. इधर अभी आप देखने से, एंड ब्लो आउट्स आर hollows or holes formed by the removal of particles by the wind. These are actually blow outs or deflation basin ऐसा है.
तो यू कैन सी यहाँ से विंड जाएगा तो इस पोर्शन का जो मटेरियल है पार्टिकल्स है वो उड़ा के और कहीं पे ऐसा एरिया पे डिपॉजिट करेगा, तो ऐसा बेसिन्स बन जाएगा इस जगह पे। हियर आल्सो यू कैन सी these basins. These are called deflation basins. The fourth one is SUGENs. ये भी क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। SUGEN is erosional aeolian landform in which rock masses having alternate hard and soft layers and having capped import like depression form. ऐसा है, एक रॉक होगा जैसे मशरूम रॉक का जैसा, लेकिन यहाँ तो ऐसा है रॉक का अपना एक तो हार्ड पोर्शन होगा, सॉफ्ट पोर्शन भी होगा, तो पूरा सॉफ्ट पोर्शन को ये इरोड करके जाएगा एंड इट विल हैव द शेप ऑफ ए इंक पोट, जैसे इंक पोट जैसा एक शेप इसको तो बन जाएगा। तो ऐसे पहले तो ऐसा सॉफ्टर एरिया को इरोड करेगा, हार्डर रॉक के बीच के जो सॉफ्टर एरिया है ये तो इरोड करेगा, वो पूरा इसका तो इरोड करके लास्टली देयर विल बी हार्ड रॉक होगा, उसके नीचे जो सॉफ्ट रॉक है वो हो जाएगा, फिर हार्ड रॉक हो जाएगा। लेकिन ऊपर ऐसा रॉक होने से यू कैन सी हियर आल्सो ऐसा कंटिन्यूअस एक तो शेप है, दीज आर हार्ड रॉक एंड बिलो देयर वाज सॉफ्ट रॉक। इसका तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऐसा कर्व करके लेके गया है, यहाँ भी ऐसा कर्व करके लेके है। And niche, if you look, you can see again the hard rock area. You can see here this area. तो ऐसा continuous होगा, या this got the shape of an ink pot. That is why it is known as SUGEN. This is same way. All these are like ventifacts. जब wind blow करेगा, वो hard rock को थोड़ा सा इरोड करेगा, लेकिन उसके साथ में जो soft rock है उसको तो ज्यादा से ज्यादा इरोड करके लेके जाएगा। तो क्या होगा, इसका एक शेप मिल जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट शेप दिस वेंटिफैक्ट्स वी विल यूजुअली टर्म्स वी विल गिव डिफरेंट टर्म्स लाइक स्यूजेंस, अभी मशरूम रॉक देखा है, ये सब ऐसा वाला चीज है, सेम ही चीज है, बट इट हैज अभी यार्डंग्स सेम है, यार्डंग्स भी सेम। एन एलोंगेटेड इरोशनल लैंडफॉर्म commonly found in desert resemble the hull of an inverted boat. ऐसा है, हमको पता है बोट ऐसा होगा ना, ऐसा शेप का होगा बोट। तो you can, if you look, you can see same portion here, ऐसा this portion जैसे portion ऐसे वाला portion we will, if you look here also ऐसा कार्व होगा, यहाँ भी ऐसा कार्व, ऐसा चीज, that kind of shape we will say it as yardings. So when you get the question, the feature, the erosional feature created by wind which is having the shape of an hull of a inverted boat, बोलने से you want to write it as yarding. Then another one, insel bugs. अभी साइकिल ऑफ इरोशन में बर्थ है, अभी डेविस का है, पेंक्स का है, एलर्किंग है, वो सब का साइकिल ऑफ इरोशन है। तो इसमें इफ यू लुक द इरोशनल फीचर में अभी पेंक का देखने से he has mentioned this name insel bugs because it is mostly seen in arid region. And how it forms, it is an isolated hill or ridge or small mountain that is abruptly protrudes out from a virtually level surrounding plains. ऐसा है, एक तो प्लेन एरिया होगा, इसमें जल्दी एक तो ऐसा वाला, एक तो हिल होगा, रिमेनिंग ऐसा होगा, बीच में फिर एक तो होगा ऐसा। ये क्या है, क्योंकि ये प्लेन था, लेकिन प्लेन तो पहले एक तो माउंटेनियस एरिया था, लेकिन ये पूरा एरिया सॉफ्टर रॉक को ये तो रिमूव करके जो हार्डर पोर्शन था दैट रिमेन्स एज हिल्स, और छोटा सा माउंटेन होगा, नहीं ये तो रिज सिस्टम होगा,
ऐसा ऐसा माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन गया होगा. See here, because these are hard rock that was existing. इसको तो इरोड करना धीरे धीरे, इसका तो इरोशन बहुत स्लो में हो रहा है, इसलिए तो ऐसा एक तो स्ट्रक्चर बन जाएगा जस्ट लाइक ए हिल दैट हैज वर्टिकल साइड्स ऑन ऑल दिस साइड में. इसका तो वर्टिकल साइड्स होगा ऐसा. एक तो आइसोलेटेड हिल एक प्लेन रीजन में होने से, especially in arid region or semi-arid region, we can call it as 𝐬𝐴𝐺. इसको तो monarchs भी we will call it some in humid regions we will call it as monarchs also, just the same isolated hills. Then domiciles, rock pillars having resistant rock at the top and soft rock below. ऐसा है. If you look, you can see resistant rock at the top में ऐसा देखने में होगा. कोई किसी ने एक तो हार्ड रॉक उड़ा के एक पिलर के ऊपर रख दिया, ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर है. In the early stage, this looks like this, तो ऐसा था. And in the top portion there were hard rocks. बट क्या होगा, ये नीचे वाला जो सॉफ्ट रॉक था इसको तो पूरा इरोड कर दिया, तो इस पोर्शन कोलाइड होकर नीचे गिर गया है. एंड द रिमेनिंग जो पोर्शन है उसके ऊपर वो हार्ड रॉक एग्जिस्ट करेगा ऐसा. सो दीज आर कॉल्ड डिमोइसल्स. हियर आल्सो यू कैन सी द सेम वे. Earlier it will be like this. ऐसा एक तो हिल था, लेकिन इसका तो जो सॉफ्टर पोर्शन है वो इरोड करके नीचे गिरा है. एंड द रिमेनिंग पोर्शन देयर विल बी हार्ड रॉक एट द टॉप एंड द रिमेनिंग with. So all this, if you look, these are all we can say it as venti facts का different styles है, different ये है forms है. Then comes mesa and buttes. Mesa like plateau, smaller than plateau. It's like a table top mountain. It is actually a flat table top mountain है, ऐसा होगा. यहाँ flat होगा, just like we will say it as plateau. Smaller plateaus we will usually say it as mesa, because they are isolated flat topped hills, not like a regular hill. It is a flat topped hill. We know that the plateau is also like that. It is ऐसा एक तो elevated land है, उसका side तो steep होगा, and there will be large flatter area. in विजुअल में एक तो फ्लैटर एरिया जैसा लगेगा, जैसे मेसा भी ऐसा है, सेम है, लार्ज आइसोलेटेड है, not the same size of a plateau but smaller than plateau, and usually it is flat topped. And a butte is also a flat topped hill with steep sides, so smaller than mesa. Mesa से भी ये तो smaller है. If you look here you can see ऐसा वाला, ये तो फ्लैट टॉप है लेकिन स्मॉलर इन साइज है. ये सब ऐसा ऐसा बट्स है. ऊपर तो फ्लैट होगा, टॉप तो देखो तो फ्लैट टॉप है, बट दिस इज एक्चुअली मेसा. ऑलमोस्ट से लाइक फ्लैट टॉप हिल्स. एक का तो लार्ज होगा, दूसरा बट है तो स्मॉल है. Almost the shape of a plateau, flat top. And so these are the major erosional features made by wind. तो ये नाम सब याद रखना है, और ये शेप तो याद रखना है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा नहीं बोल सकता कि ये ही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसलिए तो एक ही सेंटेंस में देयर है, बट यू वांट टू रिमेंबर द शेप्स. अभी वेंटी फैक्स का शेप क्या है, अभी मशरूम का शेप क्या है, तो वो क्वेश्चन बॉल मिलने से भी हमको समझ में आएगा. इफ दिस इज द शेप, दिस इज मशरूम रॉक. इफ दिस इज द शेप, so this is डिफ्लेशन बेसिन. तो ऐसा शेप तो याद रखना है. नहीं ये तो ये सॉफ्ट एंड अल्टरनेटिव हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होने से, जैसे इंपोर्ट जैसा एक तो फीचर बनाने से, व्हाट इज दैट, दैट इज फ्यूजन्स है. तो ऐसा याद करके देखना होगा.
𝐬𝐭𝐮𝐝𝐵𝐼𝐻𝑍𝑐, 𝗲𝗏𝐻𝑍𝑐. 𝗲𝗏𝐻𝑍𝑐 means actually the phase. Mesa. So another one is depositional landforms. So for wind in a desert, if you look, main thing you are seeing is two things. One is hamadas, second one is sand dunes. जैसे अभी आप राजस्थान में जाओ जहां में डेजर्ट है, if you go there, you can visualize two areas. One is hamadas and hamadas of rugged region. Another one is this sand dunes regions. जहां पे you can see sand ने अपना dune बना है, अपना mount बनाया है. So that area we will say it as dune area. Another one is rugged area, that is hamadas, that also we will discuss. So what is sand dunes? Any accumulation of sand grains shaped into mount of ridge by the wind under the influence of gravity. अभी जो loose material है, like हम बोला है, two kind of erosion is happening. एक तो deflation है, दूसरा है abrasion. तो deflation में जो sand है उसका weight बहुत कम होगा, उसको उड़ा के जहां पे ये wind का velocity कम होगा उधर deposit करेगा, तो ये उड़ा के ऐसा वाला dunes बन जाएगा. So we know different kinds of dunes are there, like Barkans है, crescent shape का, तो ऐसा different dunes है, लेकिन mainly we will say these kinds of deposits are sand dunes. And it is also formed in coastal area, and that is named as coastal dunes. The dunes formed in desert, we will say it as sand dunes, and dunes which is formed in coastal area, we will say it as coastal dunes. Then longitudinal dune or sheaf. So what is longitudinal? पहले तो ऐसा था deposition, ऐसा deposition था. अब लोग देखने से ऐसा होगा इसका deposition. लेकिन जहां पे वो wind है, वो wind यहाँ से आएगा, तो इसका either side में it will deposit the sand. It will deposit the sand. Right? Longitudinal. हम कल लास्ट क्लास वो क्लास में बोला है, अभी रिवर जा रहा है, दिस इज द टॉप ऑफ माउंटेन एंड दिस इज द सी. सो यहाँ से यहाँ, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर. सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट. लाइक द सेम विंड भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाए, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में इट विल ऑन ईदर साइड जस्ट पैरेलल टू द विंड मोशन, parallel to the direction of wind, prevailing wind, it will deposit the sand. So that is called longitudinal dunes, and is a same, we will say it as sheaf. Sheaf, longitudinal dunes are also known as sheaf. Remember the name. And there is, if it is depositing opposite, ऐसा इसे wind का जो cross आता है और ऐसे just like the dunes here, ऐसे wind होगा तो ऐसे deposit करेगा इसका cross. So this kind of deposition we will say it as transverse dunes. Dunes form transverse or to the prevailing wind or just perpendicular to the prevailing wind, then that we will say it as transverse dunes. ये भी याद रखना है. Then the barkans. Barkans are crescent shaped. जैसे मून का crescent shape है, उसी shape में dune को deposit करने से we will usually call it as barkans. ये भी question आने का chances है. It has two horns. ऐसा horn होगा इस side में भी, इस side में भी वो horns होगा इसका तो, and it will have the shape of moon, half moon. Moon का ऐसा shape होगा. That is why it is known as barkans. Then the hamadas or rug. If you go to any desert, before seeing the sand dunes, you can see an area with low
of pebbles, small rock pieces you can see ऐसा बहुत कुछ यहाँ देख रहे हैं ना जैसे यहाँ भी. So these are called hamadas because क्या होगा जो लूज मटेरियल है अभी एक तो सरफेस था उसमें सैंड भी होगा ऐसा पेबल्स भी होगा कोबल्स होगा बड़ा बड़ा पत्थर भी होगा. ये जो लूज मटेरियल्स है लाइक सैंड सोइल इसको तो उड़ा के वो सैंड ड्यून में डिपॉजिट विंड ने ये उड़ा के सैंड ड्यून्स है ना उधर उस जगह पे डिपॉजिट करेगा. तो क्या होगा द रिमेनिंग bigger particles or material will remain at that place. So it will looks like an area that is filled with pebbles. ऐसा pebbles का एक तो ऐसा extensive area होगा उधर से जो loose soil loose less heavy material sand को लेके जाएगा. तो remaining area में ऐसा pebbles होगा. So that area we will say it as hamadas or rug. Between two longitudinal dunes, there is area with bare sand. Bare sand free area है. Sand उधर sand तो नहीं होगा. So उसे बोलता है sorry missing hamada or rug. Rug is a regional name and usually we will say it as hamada. Then another important one is loess plains. Most significant wind deposit है. It came from the German term that is loam. Loamy soil हम लोग सुना होगा. That is confined soil है. So that kind of area where you can see large extensive plain in the desert region or arid region we will call it as loess plain. And it's mostly consists of quartz, silt, clay and carbonate minerals. These are the compounds. So loess plains are plains which is formed by wind action. You have to remember which kind of question hoga, which kind of plain is created by aeolian process or by wind. Then you want to write loess plain. So these are the major landforms you want to remember. All these names is very significant. There will be chance of asking question from most probably from this. I will remind the names: Ventifacts, mushroom rocks, deflation basin, fusion, yardangs, inselbugs, mazas and buds. And depositional feature: sand dunes, barkans, longitudinal dunes, and loess plains. Now we can discuss about the glacial landforms. Glacial means the moving ice. The moving ice mass down slopes under the impact of gravity is called glacial. बड़ा ice होगा वो snow line होगा accumulation of ice above snow line. जहाँ से the first area ऐसा वाला एक high area होगा लास्ट में sea. इधर sea होगा. तो sea से कौन सी एरिया पे हमारा स्नो स्टार्ट होता है वही अभी यहाँ से स्नो है. तो ये जो लास्ट एंड एरिया को वी विल से इट एज स्नो लाइन. उसके नीचे स्नो नहीं होगा, उस लाइन के ऊपर स्नो होगा. तो दैट इज व्हाई इट इज आइस होगा. तो उसी लाइन को वी विल से इट एज स्नो लाइन. सो this glacial also occurs above this snow line area. This snow line area के ऊपर you can see glaciers. And what is this glacial? अभी deposit ice तो snow deposit होके एक के ऊपर एक deposit होके this will get hardened and it will become a mass of ice. वो ice we will say it as glacier. When it start moving because of अभी बहुत ज्यादा heavy हो गया तो ऊपर से वो नीचे आने का कोशिश करेगा because of this gravity and slope वो ice चीज
आइस शीट तो नीचे आने का कोशिश करेगा. So that kind of moving ice, we will say it as glacier. There is two terms you want to remember. One is glaciation and second one is glaciarization. So what is glaciation? The action of moving ice on land. जो moving ice है, glacier है, वो अपना वो लैंड में जो रास्ते से वो आ रहा है, वो रास्ते पे उसका एक्शन है, उसे we will say that for that kind of action we will say it as glaciation. Then glaciarization, the coverage of an area by moving glacial ice. जितना भी एरिया कवर कर रहा है ये जो आइस और द ग्लेशियर, उसी एरिया को we will say it as glaciarization. Glaciation is an action. Another one is the coverage area by the glacier. So remember these two terms. So just like the fluvial action and the aeolian action, the glacial also have its own landforms. It also forms its own landforms, either by erosional or the depositional active action. It will create certain kind of landforms. Let's look each of these in detail. It consists of U-shaped valley. In fluvial action, it was V-shaped valley. Here it is U-shaped valley. Then the hanging valley, which is also have the shape of U, and then cirque, then arcs, then horn, then crag and tail, and the fjords or fjords. ये दोनों नाम बोलेगा. यू शेप्ड वाली है, हैंगिंग वाली है, सर्क्स है, आर्च है, हॉर्न है, क्रैग एंड टेल है, एंड fjords है. These are the major erosional features. And the depositional features, glacial depositional features are moraines, drumlines, earthquakes, caves, and outward plain. If you look here in aeolian, it was lowest plain, and in fluvial action, it was peneplain, and here it is outward plain. So every process you can see, every action you can see, the final output will be some kind of plane, and that varies in name because of the different activities by different agents. So first one is U-shaped valley, steep valleys with concave slopes है, इसका तो दो साइड में, and it is broad, it has broad valley है, not like the V-shaped valley तो ऐसा होनी चाहिए, ये तो ऐसा नहीं है, it is has the shape of U, and broad flat valley falls in U shape. That is why, because of this shape, guess its name U-shaped valley. अभी यहाँ से आइस है, आइस आ रहा है, तो आइस का ऐसा बड़ा बड़ा क्यूब्स ऐसा होगा इसका तो फ्लो, तो इसलिए it has got this U shape. Steep valley है, concave slope है, and broad flat valley है, so that kind of valley. और अभी ये भी ऐसा पूछेगा, U-shaped valley is created by fluvial action, aeolian action, glacial action, or karst region, karst action. वो ऐसा बोलने से you can give the answer. And next one is hanging valley. This is also the valley of tributary glaciers which joins the main glacial valley of much greater depth. Abhi, this is the U-shaped valley that we have discussed right now. It has the shape of U. तो क्या होगा, इसका tributaries होगा, जहां से इसको तो जो पानी मिलता है वो tributaries. But so this will just show, this will just look like a hanging valley. You can see it, it will looks like a hanging valley.
So these are called hanging valley, the valley of tributary glacier. कभी भी इसमें direct connection नहीं होगा. Here also you can see hanging valleys, and you can see the fjords here. I will tell you what is that. Then hanging valley, then comes the cirque. The armchair shaped or amphitheatric cirque is a steep walled depression representing a glaciated valley head. It has also, we will say it has horseshoe shape. Actually, when we most of the question you can see armchair like shaped feature created by glacial is called cirque. Here the question आने का chances है. If you look here, you can see like an easy chair, there is a shape. So this is called actually cirque. Here there will be top and यहाँ से ऐसा एक तो chair जैसा ये होगा. So these are called cirques. यहाँ से chair just like a chair. यहाँ अभी बैठने से it will just like looks like a chair. तो ऐसा chair होगा. This is called cirque. Armchair like depression, which is created by glacial action. A rock basin is formed at the floor of a cirque due to erosion and is filled with water, forming a lake called tarn. TARN. कल हम लोग पढ़ा है प्लंज पूल बोल के एक तो पढ़ा है in waterfall. There at the bottom of the waterfall, the same like depression you can see because of the erosion. There is plunge pool तो बनाएगा because of the fluvial action. Here instead यहाँ पानी आएगा. यहाँ you can see the water here because of the depression created by glacial at the bottom of cirque, and that kind of lake you can say it as tarn. TARN. Remember this name also. The lake created at the foot area of a cirque is called. ऐसा question पूछ सकता है. That is tarn. Then arch. A thin crust of rock left after two adjacent glaciers have thrown a steep ridge into a rock. It is a narrow ridge of rock which separates two valleys. ऐसा है. Two valleys इधर होगा यहाँ से. इसके two valleys यहाँ होगा. इसको तो डिवाइड करने के लिए एक ऐसा रिज होगा just like a hill, but यहाँ if you look the edge is very sharp. Edge is very sharp here. Like other mountains तो ऐसा होगा, ऐसा डिविजन होगा. तो यहाँ भी एक वैल्यू होगा, यहाँ भी एक वैल्यू होगा. लेकिन here it is just like that. It is steep ridges है इसका तो. So that kind of steep ridges is known as arcs. Another one, a col is the lowest portion on a mountain ridge between two peaks. अभी एक तो आर्ट ऐसा हो गया है. These are arcs. वो edge है, sharp edges है. That is arc. And इसका जो नीचे का ये portion, this portion. Here also you can see arcs ऐसा आएगा. यहाँ जो ridge नीचे का दो between two the क्या वो ऊपर का ये जो जगह है, this is called as col. The col is the lowest point on a mountain ridge. Mountain ridge ये है, that is arc है. Arc का वो lowest portion है, we will say it as col. So remember these two names also. One is arc and second one is col. And the third one is horn. Horn, अभी rhinoceros का horn
है अभी ये है ना, जस्ट लाइक द शेप ऑफ हॉर्न देयर इज अ फीचर दैट इज ट्रायंगुलर फेस्ड peak formed due to recession and intersection of 3 or more circuits. Circuit ऐसा है, ये तो ऐसा शेप में है, that I have told you. तो दूसरे इस साइड में भी ऐसा एक सर्क्यू होगा, तीसरा तो फाइनली इट विल कम लाइक दिस, ऐसा एक तो स्टीप साइड ये हो जाएगा। यहाँ भी एक सर्क्यू है, इस साइड पे भी एक सर्क्यू है, इस साइड पे भी एक सर्क्यू है, तो ये पहले लास्ट मीट होने से फाइनली देयर इज ए structure remaining that is called horn, just like the horn of animals you can see here. So this is called horn intersection. अभी यहाँ देखो तो you will can see this is the horn and from horn ऐसा एक horn होगा, यहाँ से ऐसा ridges होगा extend करके, and they are sharp, they are called arc, and यहाँ से वो इसका नीचे का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। देन द क्रैक एंड द टेल, द लैंडफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल रॉकी हिल, स्मॉल रॉकी हिल है, दिस इज स्मॉल रॉकी हिल दैट इज कॉल्ड क्रैक फ्रॉम विच एक्सटेंड ए टैम्बरिंग रिज ऑफ अनकंसोलिडेटेड डेब्रिस। इसमें होगा ऐसा टेल जैसा एक तो एक्सटेंशन होगा इसका, बिकॉज अभी इसमें देखने से यहाँ से आइस वो ग्लेशियर का मूवमेंट ऐसा होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। ये जो रेजिस्टेंट रॉक है ये तो हार्ड रॉक है, तो क्या करेगा इस पोर्शन को ऑलमोस्ट इरोड करेगा, एंड जो इस पोर्शन में इरोड करेगा, लेकिन ये सॉफ्ट रॉक को इरोड करना मुश्किल है, तो द सॉफ्ट रॉक बिहाइंड दिस हार्ड रॉक विल रिमेन। यहाँ का ये तो सॉफ्ट रॉक होगा, ये तो रिमूव करना मुश्किल है आइस के लिए, तो ये दिस विल रिमेन एंड इट विल गेट द शेप, ऐसा एक तो शेप बन जाएगा, एंड दिस पोर्शन विल बी हार्ड रॉक एंड दिस पोर्शन विल बी सॉफ्ट रॉक, बिकॉज यहाँ इरोशन पॉसिबल नहीं है, हार्ड रॉक इसको तो प्रिवेंट करेगा, और ऊपर का जो पोर्शन है वो इरोड करके जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ रॉक्स फॉर्म, ये पूरा को बोलेगा क्रैक, एंड द रिमेनिंग इसका तो रेसिडुअल रिमेनिंग डेब्रिस का वो अनकंसोलिडेटेड एरिया है, दैट वी विल से इट एज टेल ऑफ दैट क्रैक। And you can see there is one term crevasses. So what is a crevasse? A deep open crack, especially on a glacier. अभी glacial में जो open cracks होता है, that is termed as crevasses. So remember that name also. There is in a glacial is known as crevasses. Remember that also. Then comes the fjords. So fjords क्या है? Fjords are glacial trough. Glaciated just like U-shaped valley you can see here. So ऐसा trough होगा that is been occupied by sea water. Yes, that is being occupied by sea water. Sea water ऐसा salt water यहाँ अभी देखो दिस इज सी एक्चुअली, सो ये दिस वाज दी ट्रैन बोलेगा ना, ऐसे यहाँ दिस वाज अ डिप्रेशन और ग्लेशियर ट्रफ था, उसी एरिया पे यहाँ से साल्ट वाटर का इंट्रूशन हुआ है इस रीजन पे। सो दिस एरिया वेयर यू कैन सी साल्ट वाटर और द वाटर फ्रॉम द सी, वी विल से इट एज fjords or fjords. So these are the major erosional features that is created by the glacier. And the next one is the depositional landforms of glaciers. What are the depositional feature बोलने से the main depositional feature is moraines. Moraines are ridge-like deposition feature of the glacier tilts. अभी आप लोग अभी एक तो आइस जा रहा है, तो इसका दोनों साइड में इफ यू लुक ऐसा वाला डिपोजिशन, एक इधर है
एक इसका साइड पे होगा, दोनों साइड पे होगा, and at the end also you can see a traverse deposition. So these depositions feature that has the shape of a ridge, we will say it as moraines. So there is three kind of moraines are there. One is lateral moraines, that parallel करके इसका तो जो side से आ रहा है, that is lateral moraines. Then the medial moraine that comes through the middle area and the end portion. At the end, इधर से if you look, it is water, यहाँ से पानी जा रहा है, तो इधर तक ये, इसके बाद ये तो मेल्ट होगा, तो इधर इसका डिपोजिशन होगा ऐसा. So this is called end moraine. So there is three kind of moraines. If you look here, these are lateral moraines on the either side, and at the center also you can see medial moraines at the center, and at the end portion you can see ऐसा, इसको तो खत्म होने के बाद यहाँ लास्ट में ऐसा ऐसा ये डिपोजिशन लास्ट में ऐसा क्रॉस करके आएगा. So that kind of deposition we will say it as end moraines. Terrains are ridge-like deposition feature of a glacial hills. Then comes the escapes. This is also a depositional feature. So इसमें क्या है? Are long, narrow, just like moraines. It also has a deposition like this, but it has sinus ridges. Sinuosity हम बोला है ऐसा ऐसा movement है, तो ऐसा ridges इसका भी होगा. That kind of elongated narrow ridges है, इसे हम बोलेगा escapes. And it is mainly consist of just like the moraine, sands and gravel का इसका deposit है. वो देखो middle of the round of वो moraine का वो area, उसका तो center में ऐसा sinus ridges है, इसे we will say it as escapes. Then another term you can see, caves are hummocky terrain formed by material that has been transported by glacial melting. ऐसा caves है, escapes का छोटा, जैसा ये तो small है, same like escapes भी इधर देखने से ऐसा है, ये तो small area है, तो we will say it as caves. hummocky terrain है formed by and is transported by glacial melting से ऐसा, just like escapes there is small area that are caves. And the third one is drumlins. Drumlins also deposit in the form of teardrops. जैसे आई का tear है, वो ऐसा drop है, ऐसा small drops होगा. These are also deposition. It is elongated maximum up to kilometers होगा, बाकी सब तो बहुत lengthy में होगा, लेकिन drumlins maximum up to 2 kilometer elongated होगा, and it will look ऊपर से धरती के ऊपर से देखने से it will looks like a teardrop, and the teardrop like hills है ये तो, and it is also made of sand and gravels. These are the major deposits. If you look here, one is moraine, same way a deposition feature यहाँ साइड में है. Then the escapes ऐसा sinus movement है, उसका तो छोटा पीस को हम लोग बोलेगा caves, and इसका बहुत छोटा ऐसा ऐसा pieces है at the center, we will say it as drumlins. Then outwash plain और संतर इसे बोलेगा. Outwash plains are wide, tenderly sloping sheets of glacier sheets formed of glacial deposit. ऐसा है, ये ऐसे एक तो हिल से आ रहा है, तो सडनली द स्लोप डिक्रीसेस, तो यहाँ इसका डिपोजिशन हो जाएगा, जस्ट लाइक द डेल्टा, ये लोग हम लोग बोला है ना लास्ट, तो ऐसा एक तो डिपोजिशन यहाँ भी होगा. So that area deposition plains which is created because of this kind of deposition by the glacial as well as the fluvial action, ऐसा वाला एक तो plain बन जाएगा, that is called outwash plains. So these are the major depositional features of glaciers. We can stop here.
Tomorrow we can go for karst region and the coastal areas. इसमें कुछ डाउट है आपको? No, sir. ओके ये नाम ना इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखना है क्या क्या चीजें है ना, ये तो कुछ टाइम तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो शेप याद रखना है जो दिखा है ना। जी sir. ओके ओके, कैन वी स्टॉप नाउ? Okay, sir. Good night, Okay. sir. Thank you, sir. ओके,